सो गाइज वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और आज है 31 अक्टूबर 2022, 31 अक्टूबर 2022। और आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि हैलोवीन डे है। और अगर आप देखें तो आज के दिन रिफॉर्मर डे भी है। तो बेसिकली आज का दिन इसलिए इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज कुछ बहुत ही खास हुआ था। आज सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो खास वजह है आज के दिन की वो है बिटकॉइन का जो वाइट पेपर है। आज उसको 14 साल हो जाएंगे। 14 साल पहले एग्जैक्टली 31 अक्टूबर 2022 को बिटकॉइन का वाइट पेपर जो है वो रिलीज हुआ था। और आज हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा इकोसिस्टम जो हम बात करते हैं वेब 3 की, हम बात करते हैं इथेरियम की, सोलाना की, कार्डानोस की और अलग अलग टोकन्स की और 20,000 क्रिप्टो। और हम 3 ट्रिलियन US डॉलर का जो इकोसिस्टम जो किसी वक्त में मार्केट कैप में पहुंच गया था जब क्रिप्टो अपने बुल रन पे था। तो हमने ये देखा कि पूरा का पूरा इतना बड़ा इकोसिस्टम, और ये जो आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हो, ये जो आप क्रिप्टो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हो, ये जो आप ट्विटर पे हो, ये जो आप क्रिप्टो की बात कर रहे हो, ये सारी चीजों की जो बात आज होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और एक ही इंस्पिरेशन है। और उस इंस्पिरेशन का नाम है बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन का व्हाइट पेपर नहीं होता तो बिटकॉइन नहीं होता। बिटकॉइन नहीं होता तो ये पता नहीं चलता कि आप बिना किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई किए यू कैन स्टिल रन अ मॉनेटरी सिस्टम विच इज डिसेंट्रलाइज। बिना किस पे रिलाई किए, बिना किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के, बिना किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के किस तरीके से आप एक डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी नेटवर्क चला सकते हो और किस तरीके से आप एक डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ये हमें बताया सतोशी नाकामोटो ने अपने व्हाइट पेपर के द्वारा। व्हाइट पेपर की इतनी इंपॉर्टेंस है, मैं ये देख रहा हूं कि उसकी इंपॉर्टेंस को जो लोग समझते हैं वो तो आज बहुत खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उस मोमेंट को। और कई लोगों को लगता है कि इट इज जस्ट अनदर डे। ये जस्ट अनदर डे नहीं है, ये उतना ही ऐतिहासिक दिन है कि जैसे कि आपकी जिंदगी में कोई भी बड़ा दिन जो होता है, चाहे जैसे आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है। मैं आपको बताऊं, आज अगर आप जिंदगी में क्रिप्टो के अंदर एक होप देख रहे हैं, अपना एक नया करियर देख रहे हैं, अपनी एक नई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, अगर आप उसको एज अ हेज अगेंस्ट द रिस्क देख रहे हैं, उसके अंदर अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं, क्रिप्टो से अगर आपके सपने पूरे हो रहे हैं, क्रिप्टो को अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं, क्रिप्टो अगर आपको पावर दे रहा है, अपनी प्राइवेसी की डेटा के ऊपर ज्यादा कंट्रोल दे रहा है, उसकी एक ही वजह है सतोशी नाकामोटो का वो विजन। आज सतोशी नाकामोटो ने अगर ये बिटकॉइन व्हाइट पेपर को रिलीज ना किया होता, बिटकॉइन के व्हाइट पेपर के बाद बिटकॉइन ना होता, तो ये पूरा इकोसिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एग्जिस्टेंस में नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में नहीं आता और वेब 3 फिर भी बनता। वेब 3 हो ही नहीं सकता था जब तक उसको बिटकॉइन ने प्रूव करके नहीं दिखाया होता। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेगमेंट। और आज के सेगमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इंडिया के क्रिप्टो इकोसिस्टम में व्हाइट पेपर को सेक्शन बाय सेक्शन डिकोड किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। और मेरे साथ जो स्क्रीन पे हैं, इनसे बेहतर इंसान, इनसे बेहतर व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर कोई है जो इस चीज को अपने इतनी डिटेल में और इतने इस तरीके से समझा सके कि सबको एक स्वरूप आज जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो आज से पहले कभी नहीं बनी होगी। मेरे साथ है राजश्री मैत्रा। मैं चाहूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दें, लेकिन मैं उससे पहले ये बता दूं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है और इनके बारे में जब आप सुनोगे तो आप कहोगे कि सर ये कहाँ पे थे, और इनको हम बार बार चाहेंगे सुनना और बार बार आप इनको बुलाया करें। तो मैं चाहूंगा राजश्री आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें और उसके बाद हम शुरू करते हैं फिर अपने इस प्रोग्राम को। Sure. Thank you for having me. And yeah, my name is Rajarshi Maitra, and I have been into Bitcoin from 2017. And pehle, like I was basically interested on the idea, and I came from a civil engineering background, and I was dabbling down this new idea of like is creating a new form of like network on the internet. And it was mostly my academic interest that got me into it, not rather than the money part. Later on I realized, okay, like you can invest into it and like also make a lot of money. And so over time, like I got so attracted
attracted with the idea, the ecosystem, जो ट्विटर के बारे में आपने बात किया, यहाँ पे जितने लोग जैसे जैसे आइडियाज के बारे में बात करते रहते हैं, and overall the vision of like doing something new and breaking some ground, that got me attracted. And eventually जैसे बाकी लोगों के साथ होते, once you go down the rabbit hole, you generally don't come out of it alive. I got absorbed full time into this industry as a developer in 2020, and currently I work on various open source projects around Bitcoin and Bitcoin infrastructures. One major part I'm focusing on is a project called BDK, Bitcoin Development Kit. It's a software library created to make wallet development as easy as possible for wallet developers or application developers. The idea ये है कि जो लोग application बनाते हैं उन लोगों को Bitcoin engineering नहीं करना है. There are cryptographers who can do the Bitcoin engineering. जो लोग application बनाते हैं उन लोगों को एक easy interface चाहिए. Apart from that, I work around helping out in the reviewing effort of Bitcoin code, and in general, like being engaged in community and stuff. So that's briefly my introduction. Amazing. And एक चीज आप बताना भूल गए कि आप एक बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट भी हैं. Yes, I am. राइट. तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, मैक्सिमलिज्म के ऊपर भी, बट उसको मैं आज मेरा टॉपिक वो नहीं है. आज हमारा टॉपिक है कि जो बिटकॉइन का वाइट पेपर है उसको हाउ वी कैन make people understand about the Bitcoin white paper and about the different sections that are there in the white paper and why white paper was required and was Bitcoin the only attempt. इससे पहले भी कभी किसी ने बिटकॉइन जैसी कोई चीज बनाने की कोशिश करी? थोड़ा सा हिस्ट्री से चलते हैं और फिर उसके बाद हम बिटकॉइन के वाइट पेपर पे आते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा मैं बिटकॉइन के वाइट पेपर के बारे में. फिर उसके बारे में बिटकॉइन के अंदर जो अलग अलग सेक्शंस है उसको राजश्री बताएंगे और राजश्री की जो इन डेप्थ नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ जो है, ये आज बिटकॉइन के वाइट पेपर को जो आप समझ लोगे ना, आप जिंदगी में कभी फिर भूलोगे नहीं और फिर इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट करोगे कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट मोमेंट था हिस्ट्री के अंदर. तो राजश्री, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि were there any attempts to make a Bitcoin before Bitcoin actually came into existence? And how many attempts were there? How close they were they successful or not? And when do you think that Bitcoin uh, uh, in initial days, do you think that it was possible to make something like Bitcoin? What was the major problem that the people who attempted to make something like Bitcoin couldn't succeed? So if you can just let us know the a little bit background of before Bitcoin came into existence. Yeah, that's a part of like the Bitcoin information or the cryptocurrency information that we generally tend to miss nowadays, because when we come here, it's already an industry, it's already a working thing. So we don't generally know like how it came together. And the short answer for that is like there were like probably more than thousands attempt of making or creating digital currencies since 1982. And the idea kind of like went back to the early internet, 1965, 1970s, when few big mainframe computers are being connected with each other and they are sending data, zeros and ones, and talking with each other. And then people very quickly realize like, okay, if computers can send zeros and ones, what are the kind of things we can send through them? And they very quickly realize like anything that you can translate into zeros and ones, you can send through computers and internet. And what can we translate through zeros and ones? The text, yeah, we can do it. Voice, we can do it. Video, we can do it. Image, music, we can do it. What about money? So the kind of like the question of like how to do money on internet is like as old as a problem of like how to do text on internet or how to do internet itself. But here's the interesting problem. Unlike other kind of categories of items which can be translated into text, like zeros and ones, like text, music, any kind of information, money is different. The problem is like if you take a series of text, you translate it into zeros and ones, and you transfer it through the internet, all good and fine. You have a copy of text in machine one, you have a copy of text in machine two, all good. Now think about money. Money is something that you have to transfer wholly from one place to another. You cannot have a copy of money. So in economics, this is identified as the term as a scarcity. And if you think about it,
computers and networks and internet works on zeros and ones. Zeros and ones are numbers. They are never scarce. They are fundamentally unscarce, like fundamentally non-scarce. उसका property ये है कि उसको infinite number में copy हो सकता है उसको. And for all other kind of medium and platform it works. For money it doesn't work. It has to be an uncopyable thing. So this is called the double spend problem. Or in before, like, the double spend problem came as a word in the back then in 1990s, and in the academic cryptography and the distributed computing system. In 1982, few researchers described this problem in a very funny term. They even published that paper in that term, and the name of the paper is the Byzantine generals problem. And the Byzantine generals problem, that paper basically describes a situation in internet or network computers where no computer can trust each other. And their job is to come to agreement about a state of a database. It's called consensus. How to achieve consensus in a distributed, decentralized network. That was like the first ever description of the problem statement, if you can say like that, of Bitcoin. And in that paper, they basically describe the problem. They say like, hey, look, like, if we want to solve this kind of things, we need to solve this kind of problem. And it seems like in a distributed network, these are fundamental problems. You can't just go ahead and solve it with a software code or something. And that kind of like started the quest for digital money. The first ever implementation of digital money was done by David Chaum. Professor Chaum is still alive and very well, and is working in the industry. And his implementation was called DigiCash. And it used one primitive of cryptography called digital signatures, which also Bitcoin uses, but it did something extra on top of that. It blinded that digital signatures. So what it allowed is, like, it allowed to create some kind of like digital token. Like, imagine a blob of zeros and ones. And as an entity, as a bank, that can digitally sign that this blob of zeros and ones now represent rupees 1 or rupees 10 or rupees 100, depending on the bank. And if you trust that bank, you will take that blob of zeros and ones and can transfer that blob and zeros and ones to the another guy. What that other guy will do, will take that blob. Now that blob is at your place and that guy's place. Again, double spending problem. How do you solve it? Is like, the new guy will take this blob and go to the bank and say like, hey, I got this new blob. So the bank will take that blob, disqualify the previous block, and issue a new blob to the guy. So the previous guy, like, you sent me a blob that was yours first, now it's mine. I go to the bank, I replace the blob from the bank and got a new blob, and now your blob is cancelled. It's not a valid money anymore. You cannot send it to another guy. So that's how you cancel the double spending problem. But here's the problem. It still doesn't solve the Byzantine generals problem. The problem of Byzantine general was like, how do you solve double spending or any kind of consensus in a distributed network without asking anybody? Now here, what Professor Chaum created was the first digital cash implementation, but it needed a bank. And throughout 90s till exactly 2008, like, there has been numerous experimentation, research, both on digital cash implementation and different process of solving Byzantine generals problem called consensus algorithms. And throughout 90s, there has been many trial and error. In fact, like, in the very early stage of PayPal, Elon Musk was trying to solve the problem in some form of ways. But eventually, like, the reason nobody could solve it, because nobody could come up with a way without creating a central server. Now, here's what happens when you create a central server. You start a company. Now, either government comes and stop that company, or you become a regulated institute, part of the government network. And every time you do that, all this experimentation, you cannot call any one of them as failure, because nobody really failed. They just tried. They got like absorbed into banking institutions. That's how we got the credit cards. That's how we got our internet mobile banking systems, all built on the primitives of the research that has been done in 1990s. So
Now that's all good and fine as a story and history. So what happened in 2008? 2008, one crazy guy or a group of crazy guy, we don't know, they came up and they had this audacity to say, like, here's 9-page PDF and we solved a 40 years old long standing problem. And they kind of like described it in this PDF, and this PDF came 3 months or 2 months before the actual code implementation of like how to do this in real. Like, many times, most of the cases when this cryptocurrency and digital currency things or research was done, most of them are done in text, like ideas, an article or a research paper or a bulk of a sequence of ideas. Nobody ever like put it into code in any way. So 2008, 31st October, ठीक 14 साल पहले, like this paper was dropped on internet. They kind of dropped it and disappeared. They didn't try to publicize it. They didn't try to like gather attention. They just dropped it into multiple platforms, mailed it to some people personally inside the academic circle, and then just disappeared. And at first the paper didn't got any attention at all. Like, nobody paid much attention. For the noobs, like for people who didn't knew about this problem, this paper didn't make any sense. And for the people who knew about this problem, this paper was like too much audacious. It's like, we have been working on this problem for 30 years. How do you think like you can come up with a 9-page solution and call that day? It surely doesn't work. So that's why they didn't pay attention. Yeah. So, and eventually, like, what Satoshi did is like not only just publish the paper, they also came back and published the full code implementation. Now that is something huge, because now you don't just have an idea, you have a software that you can run in real network and verify that the idea is working or not. So that's how this all got started. 14 years later, this is a huge industry now. People are working, making business, building career, and all sorts of fun things. क्या सो मैं जो लोग इसको मैं समराइज कर दूं, जो राजश्री ने बताया, और कुछ लोग हिंदी में जो चाहते हैं समझना, उनको मैं बहुत ही समराइज फॉर्म में बता देता हूँ। राजश्री ने बड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए। राजश्री ने बताया कि ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन से पहले अटेम्प्ट्स नहीं थे, काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स की कोशिश की जा रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि जितनी भी अटेम्प्ट्स थी, उन सारी अटेम्प्ट्स में जैसे हैश का इस्तेमाल पहले आइडेंटिफाई हो गया था, प्रूफ आपका क्रिप्टोग्राफी का पता था, क्रिप्टोग्राफी भी पहले आ चुकी थी। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन ने क्रिप्टोग्राफी और हैश फंक्शन को इजाद किया था, इससे पहले ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। इनफैक्ट प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म के अंदर जो जो एनर्जी का इस्तेमाल है, कि जैसे सपोज ईमेल, ये भी आइडिया प्रपोज हो चुका था कि अगर स्पैम से बचना है तो आप कॉस्ट को एसोसिएट कर दो। जैसे कि आज इलॉन मस्क क्या कह रहा है, इलॉन मस्क ये कह रहा है कि ट्विटर को अगर बॉट से बचाना है तो ट्विटर में हर एक्शन को पेड कर दो। अगर किसी को ट्वीट करना है तो उसको कुछ एनर्जी लगे, उसकी कुछ स्पेंडिंग हो, क्योंकि तभी वही उसी तरीके से आप बॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीजों के ऊपर, प्रूफ ऑफ वर्क और ये सारी चीजों के ऊपर एक डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था, और काफी सारी चीजें पहले भी आइडेंटिफाई हो चुकी थी। लेकिन एक चीज आइडेंटिफाई नहीं हुई थी कि डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी नेटवर्क के अंदर कैसे सॉल्व करें। वो कैसे सॉल्व करें? डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम क्या है? डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम है कि यार, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए को एक ही बार खर्च कर पाऊं। मैं ऐसा ना हो कि 100 रुपए मैंने अगर किसी कॉफी शॉप पे गया और मैंने वहां 100 रुपए दिए, और मैं कैशियर से ऐसा ना हो कि कॉफी पीने के बाद वापस ले लूं अपने 100 रुपए और उसको दोबारा खर्च कर दूं। अपने पैसे को सिर्फ एक ही बार खर्च कर पाऊं, राइट? तो ये डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम जो थी, एक डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी नेटवर्क में कैसे सॉल्व होती? सेंट्रलाइज मॉनेटरी जो नेटवर्क होते हैं, जो बैंक्स होते हैं या क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं, वहां भी ये चीज करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पे एक मास्टर कार्ड बैठा है, एक वीजा बैठा है, उसने मेरे अकाउंट को डेबिट किया और आपके अकाउंट को क्रेडिट किया, कभी आपके अकाउंट को डेबिट किया, मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया। उसके पास वो मैकेनिज्म है, उसके पास वो कंट्रोल है उन अकाउंट्स का। लेकिन एक डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी नेटवर्क पे किसकी जिम्मेदारी है? काशिफ की जिम्मेदारी है, या उस नोड की जो जापान में बैठा है, या उस नोड की जो वियतनाम में बैठा है, या माइनर की जिम्मेदारी है कि कौन करेगा, कि कौन अकाउंट्स को मैनेज करेगा, कौन नया लेजर जोड़ेगा,
कौन नया ब्लॉक लगाएगा ब्लॉकचेन में, कौन चेक रखेगा, कौन वेरीफाई करेगा, ये सारी चीजों की जो जिम्मेदारी कौन लेगा, और कैसे सब लोग ट्रस्ट बिना ट्रस्ट किए उस कोड पे रिलाई कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पहले के जो अटेम्प्ट थे और जो बिटकॉइन ने उस अटेम्प्ट को सॉल्व किया, ये राजश्री ने ये बताने की कोशिश करी। और आप सोचो कि 40 साल से अटेम्प्ट हो रहे थे। जिस दिन से राजश्री ने एक और अच्छी बात बोली कि जिस दिन से दो कंप्यूटर्स आपस में बात करना सीख गए, बात करने से मेरा मतलब है कि जब दो कंप्यूटर जुड़े आपस में एक नेटवर्क के थ्रू, लैन के थ्रू, जब दो कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता था, उसी दिन जो साइफर पंक्स थे उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि आने वाले समय ऐसे होगा कि दुनिया भर के जो पीसीस कंप्यूटर्स होंगे वो आपस में जुड़ेंगे और आपस में वो कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, उनके थ्रू मैसेजेस भेजे जाएंगे। तो प्रिवेसी कैसे इंश्योर की जाएगी? तो ये 30-40 साल से अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे। उसमें डेविड शॉम, जो कि फादर ऑफ क्रिप्टोग्राफी भी कहलाए जाते हैं, आज भी जिंदा है, वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे अटेम्प्ट्स बहुत किए जा रहे थे। बिटकॉइन का जब व्हाइट पेपर आया तो किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया था पहले दिन, और सब हंस रहे थे कि यार 40 साल से कोई चीज सॉल्व करने में लगे हैं, ये बिटकॉइन का 9 पन्नों का जो व्हाइट पेपर है ये क्या कर देगा। इसीलिए सतोशी नाकामोटो पे शुरुआती दिनों में बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया था। लेकिन राजश्री का ये कहना है कि क्योंकि बिटकॉइन के व्हाइट पेपर के साथ साथ कोड ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, यू कुड एक्चुअली यूज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी साथ में बन चुका था, तो आइडिया और सॉफ्टवेयर दोनों साथ थे, तो लोगों ने आइडिया को उसी टाइम चेक कर लिया कि क्या ये वर्केबल है। वहां से विश्वास धीरे धीरे जनरेट होना शुरू हुआ। तो राजश्री, जब व्हाइट पेपर साइफर पंक्स की मेलिंग लिस्ट में जब पहली बार रिलीज हुआ था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से करीब रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब 31 अक्टूबर को, और उस टाइम पे जब कोई विश्वास करने वाला ही नहीं था, तो कैसे बिटकॉइन, जब हम जानते हैं कि बिटकॉइन को माइनिंग की एक प्रोसेस होती है, राइट, कि बिटकॉइन को जो ब्लॉक्स को माइन करने वाला जो होता है वो माइनर होता है। तो जब कोई विश्वास ही नहीं करता था, तो किसने बिटकॉइन के ब्लॉक्स को शुरुआत में माइन किया, और क्या वो सतोशी ने ही माइन किया, और उस समय रिवॉर्ड क्या होता था, और वो जो रिवॉर्ड मिला उसका सतोशी नाकामोटो ने क्या करा, और फिर उसके बाद जो व्हाइट पेपर है उसके अंदर सबसे पहले विश्वास किसने बताया, और फिर हम बात करेंगे कि व्हाइट पेपर के अंदर क्या क्या था। तो मैं ये शुरुआती दिनों की कहानी समझना चाहता हूँ कि कितना मुश्किल रहा होगा सतोशी के लिए शुरुआती दिनों में। Yeah, so my guess would be कि दिस इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड कि जब शुरू हुआ था नेटवर्क उस टाइम पे कोई नहीं था नेटवर्क में, हाँ। एंड एक ही बंदा who has this idea and shared it with other people. Most people didn't take it seriously. In fact, like there were like few academic critics on that, and some people said like this network doesn't scale, which is true, and this will like eventually bloat up and you will not be able to do like global financial system on top of this. So many people like rejected this idea on the same basis of like it's theoretically doesn't scale. Satoshi still went ahead and he sent this sent this paper, sent the code, the initial version of the code to Halfini and few other cryptographers who he knew like were working along the similar idea, and got an initial review out of them. And he kind of like published the code when he was very sure कि हाँ जो मैंने आइडिया सोचा है वो सही में काम कर रहा है कि नहीं. He wanted to be very sure about it himself. And in the early days, in the early version of the software, कोई भी अगर ये सॉफ्टवेयर चलाता है तो he is automatically mining, they are automatically mining. एकदम पहले जमाने में माइनर्स और नोट का कोई डिफरेंस नहीं था. एवरी सॉफ्टवेयर वाज माइनिंग एंड योर लैपटॉप वाज माइनिंग एंड वुड बी एबल टू जनरेट 50 BTC per 10 minutes in very early days. And that phase kind of went on up till end of 2000 to probably mid of 2010. After that, like FPGAs and GPU mining started becoming a thing because the network hash rate increased and difficulty increased. But in the early days, there has been a paper and some research about the data analysis from the early version of the Bitcoin blockchain. It seemed like there was only one guy who was running the node at least for first 2 months, and that is
probably Satoshi himself, because there was nobody else. And so naturally, like, many of the block rewards, and it's estimated 1 million BTC was actually gone into these early miner, they call the Genesis miner. And it was probably Satoshi. वो कॉइन कभी मूव नहीं हुए अभी तक के लिए, वो कॉइन के ऊपर रेड फ्लैग लगा हुआ है. द मोमेंट एनी वन ऑफ दोस कॉइन मूव्स द एंटायर वर्ल्ड विल गेट अलर्टेड दैट सतोशी's कॉइन मूव हुआ है. बट 14 साल में वो कॉइन मूव नहीं हुआ कभी. ये काफी ऑल्ट कॉइनर्स ये कहते हैं कि जैसे कि बिटकॉइन के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स पहले प्री माइन हो किए जाते हैं, और जो उसके अंदर फाउंडर्स होते हैं और जो पार्टनर्स होते हैं वो पहले अपनी जेब भर लेते हैं, तो वो बदले में ये काउंटर अटैक करते हैं सतोशी पे कि सतोशी नाकामोटो ने भी तो पहले कोई माइनर नहीं था, तो बिटकॉइन को खुद ही माइन किया, और सतोशी नाकामोटो ने भी एक तरीके से बिटकॉइन को प्री माइन किया है, राइट? तो इसके बारे में राजश्री आपका क्या कहना है? The answer is very simple. Like, if you wanted to do a pre-mine with Bitcoin, you would release the software 6 months after starting mining the blocks. Because the moment you release the software, anybody else can start mining the block. And he was actively encouraging people to mine the blocks. He very clearly didn't want it to be the only miner, because उसका target ये था कि decentralization लाना है, ना कि like उसका Bitcoin stash भरना है. And initial days में, like, there was no value for those coins. It was like weird things people are doing in their computer that nobody knows about, right? So value उनके दिमाग में थे, और मॉनिटरी कोई नेटवर्क में, कोई इकोनॉमी में उसका वैल्यू भी नहीं था. So and eventually, like, that same paper again shows, like, over time Satoshi knew that he wanted to get out of the network. He didn't wanted to keep mining, and over time that machine that was like putting out majority of the hash, it had some like signatures in the nonce bit जिसको एनालिसिस करके लोग but identify कर रहे थे these are the blocks made by that machine. And eventually they saw like that machine was dropping down its hash rate, and eventually it died off. When he realized that enough people are mining, he can stop his machine, go away, disappear, and he did that. So that's exactly opposite of a pre-mine. And so that's the easy answer I have. हाँ, नहीं, ठीक है तुम्हारा। राजश्री, ऐसा एक बात बताओ यार, ये जो ब्लॉक्स माइन हो गए और जो सतोशी नाकामोटो ने शुरुआती दिन में माइन किए, इन ब्लॉक्स के अंदर मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं कि सतोशी नाकामोटो दुनिया में एक तरीके का भूचाल आ जाएगा अगर वो ब्लॉक्स है, अगर उनके अंदर से कुछ बिटकॉइन मूव करते हैं जो शुरुआती दिन में, जिसको ये माना जाता है कि ये सतोशी ने माइन किए थे। तो अगर सतोशी नाकामोटो इनको टच नहीं करता है या इनमें से कभी भी बिटकॉइन मूव नहीं होता है, तो इन ब्लॉक्स को कैसे देखा जाएगा? व्हाट डू यू थिंक इज द how people are going to look at these blocks in the future? I guess historical artifacts. Oh, like, जैसे हम लोग ताजमहल को देखते हैं। yes भाई, सल्यूट। मैं लोगों को लोग जब मुझे कहते हैं कि ये पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये बहुत आपने ना बड़े डीप जाके बात बोली है। अगर मुझे कोई इतिहास देखना होता है तो मैं इतिहास की किताब उठाता हूँ। अगर मुझे इतिहास को फील करना होता है तो मैं उस ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट पे जाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम लोग अपनी जिंदगी में इतिहास को फील और एक्सपीरियंस करने के लिए ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स पे जाते हैं। जैसे कि हम लाल किले पे गए उसको फील करने के लिए कि यहाँ से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहाँ से स्पीच दी थी जब देश आज़ाद हुआ था, वो कौन सी जगह जहाँ पे झंडा फहराया गया था उसके नीचे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने स्पीच दी होगी। अगर मुझे महाराणा प्रताप की वो लड़ाई देखनी है तो उस मैदान में मैं जाता हूँ। अगर मुझे किसी महाराजा का किला देखना है, अगर मुझे अकबर का जन्म कहाँ हुआ था फतेहपुर सीकरी में, तो मैं फतेहपुर सीकरी गया देखने के लिए। मैं ताजमहल गया मोहब्बत की निशानी देखने, उसके एक्सपीरियंस करने कि कैसे रहा होगा या मोहब्बत का वो मंजर। मैं इस तरीके से दुनिया भर के मॉन्यूमेंट्स पे जाता हूँ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। जो बिटकॉइन के वो ब्लॉक जो सतोशी ने माइन किए, वो पिरामिड होंगे, वो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट होंगे
कि आने वाली पीढ़ी जब अपने बच्चों को ये बताएगी कि कुछ पास्ट में ऐतिहासिक हुआ था, तो ये जो ब्लॉक्स हैं, ये एक पिरामिड की तरह, एक ताजमहल की तरह, एक रेड फोर्ट की तरह, ये ऐसा मॉन्यूमेंट बनेगा जिसको देख के लोग अपने इतिहास को याद किया करेंगे, उसे एक्सपीरियंस किया करेंगे। और ये एक वही बंदा बोल सकता था जो बिटकॉइन को इतना डीपली, क्योंकि बिटकॉइन एक्चुअली में स्पिरिचुअल कनेक्ट भी है बिटकॉइन के साथ। बिटकॉइन आपको स्पिरिचुअली वेल बीइंग का एक तरीका भी है। ये सिर्फ एक एसेट नहीं है, ये एक आपकी एक स्पिरिचुअल और मेंटल वेल बीइंग, हेल्दी वेल बीइंग के लिए भी एक जरूरी चीज है, जिसके बारे में कभी किसी टाइम पे डीप कनेक्शन करेंगे। तो राशि, ये तो समझ में आ गया कि बिल्डिंग ब्लॉक है और ये एक तरीके से इतिहास में से याद किया जाएगा। सबसे पहला इंसान कौन था जिसने सतोशी के अंदर विश्वास जताया, और उसके बाद पहली बार बिटकॉइन एक्चुअली में ट्रांजैक्ट हुआ, और उसके बाद से लगा कि नहीं यार ये वर्केबल है और दो लोगों के बीच में बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, और वहां से सतोशी नाकामोटो को कॉन्फिडेंस भी मिला होगा कि चलो उन्हें एक साथी मिल गया। That person was Hal Finney. Hal Finney was a very famous cryptographer from the early cypherpunk days. He was a very senior guy in the community. And Hal Finney publicly gave the first review of the Bitcoin, the software, not Bitcoin, the idea. He was capable enough to go and look deep inside the C++ code and realize that this software is doing that it was supposed to do. And the problem of creating this kind of software is like, it's one thing to come up with an idea, it's completely different thing to come up with a working thing that cannot be broken, because softwares can very easily be broken. So वो कॉन्फिडेंस आई थिंक जरूरी था, कोड रिव्यू का जो कॉन्फिडेंस, एंड देन सतोशी ओपन सोर्स्ड दिस कोड सो एनीबडी कैन कम एंड टेक अ लुक. And eventually people started working on it, people started making small changes, small improvements. And so yeah, like that guy was Hal Finney, and he was in the early Bitcoin community very active. In fact, like Twitter में Bitcoin लेके सबसे पहला हिस्ट्री का जो ट्वीट मिलता है वो Hal Finney का है, एंड आई थिंक उसका डेट था 10th January 2009, which is 3 days after Satoshi released the code. And so yeah, that's probably the second guy. Some people like also speculate that probably Hal Finney himself was Satoshi. There are debates, these are open questions, nobody have proved it. Hal Finney like खुद ने बोला है कि that's not me, that was somebody else who contacted me through email and all. And so yeah, that was how the second guy of Bitcoin looked like. And the first transaction, I don't remember the date, but probably on the second week of January, the first transaction between Satoshi and Hal Finney happened. उससे पहले अगर आप ब्लॉकचेन का हिस्ट्री में देखोगे, like as you said, all the history is there, अभी भी वैसे ही एक रखा हुआ है. वो सारे ब्लॉक में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन था जिसको टेक्निकली बोलते हैं द कॉइन बेस्ड ट्रांजैक्शन, जिसमें से ब्लॉक माइनर को रिवॉर्ड मिलता है. So all the blocks before that day that Satoshi made that another transaction, or transaction from one person to another, उससे पहले सारे ब्लॉक में the transaction was one, that is like whoever was mining got paid 50 BTC for that particular block. So you can also go and check this block, the first ever transaction that was recorded in history. And yeah, Satoshi basically spent like, he took his 50 BTC wala coin and he divided into two, 25 to Hal Finney and 25 back to himself. Amazing. So Hal Finney जो है, he was the first supporter of Satoshi Nakamoto. In fact, he was the first believer. और Hal Finney का जो विश्वास था, इनफैक्ट अगर वो नहीं होते तो पहला आदमी, कहते हैं ना कि आपका पहला इंसान जब आपको सपोर्ट करता है तो आपको हमेशा याद रहता है कि यार पहले आदमी ने विश्वास जताया था, वो पहला आदमी. हर एक इंसान, हर एक की जिंदगी में एक वो इंसान होता है जिसने सबसे पहले आपके अंदर विश्वास जताया था. तो हाल फिने वो शख्स था जिसने सतोशी नाकामोटो के अंदर विश्वास जताया था, उस बिटकॉइन व्हाइट पेपर के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर. और इनफैक्ट उनकी प्रेडिक्शंस उन्होंने उसी 1-2 साल के अंदर एक इनफैक्ट बिटकॉइन के 1 साल के अंदर अंदर ऐसी प्रेडिक्शन दी थी
जिसको आज बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं कि बिटकॉइन की एक्चुअल में मार्केट वैल्यू क्या होगी, कितने का होगा एक बिटकॉइन। तो ये अपने आप में फिनोमिनल उनकी प्रिडिक्शन थी, वो भी कितने साल पहले, सोचो 13-14 साल पहले, 13 साल पहले उन्होंने प्रिडिक्शन कर दी थी। तो अब हम चलते हैं राजश्री, मेरे ख्याल से बिटकॉइन के वाइट पेपर की तरफ, उसके जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसकी चर्चा करते हैं, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि उसमें और डीपर अंडरस्टैंडिंग के बिटकॉइन के वाइट पेपर में क्या क्या लिखा है। विल यू लाइक टू शेयर द स्क्रीन? I can, or yes. गाइस, अगर आपका बिटकॉइन से रिलेटेड कोई भी सवाल है जो आप लोग सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना बिटकॉइन से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लास्ट में हम कुछ सवालों को पिक भी करेंगे और उनके जवाब देंगे। I think I shared it. Is it visible in the stream? या नाउ इट्स विजिबल नाउ। I think it's readable too. Yeah. या इट्स परफेक्ट। Nice. So cool. So कैसे जाना चाहेंगे? सेक्शन मैं बाय सेक्शन? हाँ, मतलब सेक्शन बाय सेक्शन, जैसे शुरुआत में क्या बोला, फिर अगर आप देखो तो बिटकॉइन एक्चुअली में सेक्शन वाइज, वाइट पेपर सेक्शन वाइज है। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या बताई जा रही है, उस Right. I हर think सेक्शन को ये बताया जाए। abstract is also very interesting to ये read. दिस इज And द मोस्ट इम्पोर्टेंट। yes, and the abstract basically says like what this paper is all about. And in this middle line, you can say like we propose a solution to the double spending problem using a peer-to-peer network. And this basically line kind of like culminates the entire problem of the Byzantine generals problem. The Byzantine generals problem, when translated into the domain of economics and money, transformed into double spending problem. And the problem was how to solve it using a peer-to-peer network. We all knew how to solve it with a trusted third party. He wanted to solve it with a peer-to-peer network. And this second part of this is basically the most densest description of Bitcoin as a system that you can provide. And it reads like this: the network is a network timestamps transaction by hashing them into an ongoing chain hash based proof of work. He didn't use the term blockchain because blockchain was also a known term, but this is basically the chain that he's talking about is what is known as the blockchain, and forming a record that cannot be changed without redoing the proof of work. And here he is talking about the consensus algorithm, forming a record that cannot be changed without redoing the proof of work. So immutability of that database is kind of ascertained with some form of work. The longest chain not only serve as proof of sequence of the events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. And here the trust assumption of the entire network comes is like we trust the largest pool of CPU power. We trust the largest energy source, and we trust that that largest energy source isn't lying. And this is the assumption on top of which Bitcoin works, on top of which any distributed system that you can ever create works. There always has to be a trust assumption. And in Bitcoin, the trust assumption is on a pool of energy. And later on, he shows like how he combined and linked between the incentives, economic incentives between different participants of the network, so that the maximum amount of energy suppliers are honest. They are better off being honest than to attack the chain. If the incentive was such that they are better off attacking the chain, they would have attacked the chain. So that's how the abstract basically, like, it's a small paragraph of describing how to solve this problem. And if you are a computer science researcher and if you have been dabbling into this problem, and imagine yourself like in 2008 when you thought about the problem, you also like wondered like, yeah, that's a problem that nobody have been able to solve so far. And somebody comes out and say like, hey, this is the solution, this is how you solve it. How many lines? 1 2 3 4 5, like around 10 lines. And you will surely say like, yeah, you're nuts, you don't know what you're talking about. People have like read like
wrote like thousands of lines of papers trying to solve it. You cannot just solve it so simply. Turns out you can actually solve it so simply. And the entire innovation of this paper, that the reason why it's 9 page is because it didn't have to create any new technology to do this. All the technology, all the technological component, from software to mathematics to data structures, that has been used in order to solve this problem existed since 1991. The last one, that was Hashcash, hash based, or the concept of proof of work, was 98. So 10 years. So the latest thing that he used was 10 years old. So he didn't created anything new. He didn't invented any new technology. He didn't even created the blockchain. This is very common misunderstanding. Even in the crypto space, people think like Satoshi Nakamoto invented blockchain. No, blockchain was like created in 1991 by Leslie Lamport. And it's a very simple kind of data structure that is used as a tampered evident use cases. And it's a very known thing in cryptography and computer science world. And so, yeah. So let's dig on. So here goes the introduction. It's kind of like interesting to read about it, but reading the line by line might be too verbose. Like people might lose track. So I will try to like point out some key things about different sections. Even like Yeah, I have been, yeah. yeah. That'll be the right approach. Yeah, and feel free to stop me at any time and ask question, interrupt me and all. So my personal experience with the white paper has been like, I have like read it, I don't know like how many times, but every time I read it, I kind of like find new information that I miss, like I missed last time. And it's been 4 years, and that cycle is keep on repeating and all. And just yesterday, I was reading it again, and it hit me that in this part of the introduction, he talked about something that is very interesting. That he's talking about small casual transaction, micropayments. And he said, like, the reason we cannot have micropayments is because we do not have a decentralized network. Because we do not have a decentralized network, we need a trusted third party. Because we need a trusted third party, we always need intermediation. Because we need intermediation, that intermediation is gonna take up cost. Because there is that cost, the transaction has to fill up that cost. So you cannot, in theory, have micropayment transaction through your banking network. So that was Yeah. fascinating to me. मतलब ये कितनी क्या विजन था सतोशी का, क्या बात कह गए सतोशी। वो ये कहना चाह रहे थे कि काशिफ, अगर आपको अपने ब्रदर को $35 भेजने हो या $40 भेजने हो अमेरिका, इंडिया से, क्या आप $40 भेज पाओगे? आपका भाई वहाँ पे, उसका वॉलेट गुम गया और उसके पास $50 चाहिए उसको पिज़्ज़ा खाने के लिए। वो उस देश में किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। वो नया-नया गया था, उसका वॉलेट गुम गया। उसने कहा, भाई मुझे किसी भी तरीके से आप $50 भेज दो। क्या आप उसको $50, $20, $10 इंडिया से अमेरिका भेज पाओगे? नहीं भेज पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप बैंक जाओगे और कहोगे मुझे $40 भेजने हैं बाहर, वो कहेगा वो कहेंगे आर यू किडिंग, आर यू जोकिंग, माइक $2 भेजने हो, $5 भेजने हो, यू कांट डू दैट। बिकॉज सतोशी नाकामोतो ने बोला कि जो इंटरमीडियरी चाहिए होता है सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम में, एक आपको किसी पे ट्रस्ट करना होता है दोनों पार्टियों को। तो जब पार्टी उस इंटरमीडियरी पे ट्रस्ट करती हैं और वो अपना काम करने के लिए आपसे इसी ट्रस्ट के आपसे पैसे मांगते हैं कि भैया ट्रस्ट करते हो ना, तो मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर जो एबिलिटी है उसके मुझे पैसे चाहिए। तो इसलिए माइक्रो पेमेंट्स आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको माइक्रो पेमेंट्स करनी है और अगर वो नेटवर्क अगर पॉसिबल हो सकता है, तो वो सिर्फ पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क हो सकता है, और वो बिटकॉइन था। ये कितनी इंपॉर्टेंट Yeah. बात बोल दी उन्होंने। अमेजिंग है राजश्री। And this is not a technical argument at all. हाँ, इट इज नॉट अ Like, टेक्निक। yeah, and like that's what it says. Like it was a very dense paper, so there are a lot to dig out, and I would encourage all the viewers to take their time and go through the paper. It's not big, but it's very interesting. So in the second paragraph, he just goes on, then now that's our problem.
So what is needed is an electronic payment based on cryptographic proof instead of trust. What if you could trust on mathematics instead of like employees checking into databases? Mathematics doesn't have salary. You don't have to pay math to do validation for you. Math does it हाँ, himself. So the trick yeah. was like, in order to do that cost, you still need validation, you still need to remove junk, you still need to have integrity of your database of transactions. What if, how to do that with cryptographic proofs instead of like intermediaries? So in this paper, we propose a solution to the double spending problem using a peer-to-peer distributed timestamp server to generate computational proof of chronological order of transaction. Heavy technical term. This line is like heavily technical, and it's हम्म basically describing all the components that you need in order to solve this problem. हम्म The system is secure as long as the honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating group of attacker nodes. That's the, again, assumption of any proof of work based system. So that's the introduction, and then it goes into the second part, describes a transaction. What does a transaction really means? And I find it in my experience very tricky to explain even to seasoned developers who are coming into Bitcoin space for the first time and explaining them what exactly a Bitcoin is. हम्म And so I will not like have a high hope that I will be able to explain what a Bitcoin is, but this section basically describes what a Bitcoin is. So in overview, a Bitcoin is basically a data structure called a transaction. In fact, that's not also a Bitcoin. A Bitcoin is a part of that data structure that is provable to be owned by a public key or a owner of a private key for a corresponding public key. It's called an unspent transaction output, because later on we can go over there in the section where he describes the structure of a transaction. A transaction has list of inputs and a list of outputs. This thing, this output is called a coin, a Bitcoin. What does it mean when you have a Bitcoin? It means like somewhere, either in your mobile device or in your hardware device, you have a number that can do some mathematical operation, that can solve some equation written inside this data structure called out. That's all a Bitcoin is. And वाह ये मैं यहाँ रोकूंगा। आप बिटकॉइन को ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत मतलब बड़ा नया पर्सपेक्टिव दिया है आज आपने। आप ये कह रहे हो कि बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन को डिजिटल करेंसी, डिजिटल कॉइन का नाम नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आपके कहीं वॉलेट में डिजिटल कॉइन पड़े हुए, यू नो, जिसको आप टच तो नहीं कर सकते, बट आपकी कहीं कॉइन पड़े। एक्चुअल में बिटकॉइन एक लेजर के अंदर आपके खाते में एंट्री का नाम बिटकॉइन है। आपके खाते में जो नंबर चढ़ा हुआ है उसका उसका नाम बिटकॉइन है। आपके खाते में एक वैल्यू लिखी हुई है और उस खाते का कंट्रोल आपके पास है। उस खाते का जो पब्लिक की और आपकी जो प्राइवेट की है, उसके दोनों के मिलन से जो डिजिटल सिग्नेचर से आप उस खाते के अंदर से वो एंट्री को जो भेज सकते हो, आउट कर सकते हो, उसका नाम बिटकॉइन है। वो जो लेजर के अंदर एंट्री है, आपके बही खाते के अंदर जो लिखा हुआ है 0.10, 0.20, उसका नाम बिटकॉइन है। ये कहना चाह रहे हैं राजश्री। क्या राजश्री मैं सही कह रहा हूँ? यस, एग्जैक्टली। सो ये जो आउटपुट स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें बस दो चीज होते हैं। एक होते हैं इसका वैल्यू, नंबर। बेसिकली आपने जो नंबर की बात की है कि कितने पैसे है, कितने बिटकॉइन है इन यूनिट ऑफ सतोशी। एंड और एक चीज होते हैं जिसको आप सोच सकते हो, एक इक्वेशन। मान लो एक मैथ का पजल है, वो पजल सिर्फ आपके प्राइवेट की से ही सॉल्व होगा, तभी आप जाके ये आउटपुट ओन कर सकते हो। अगर आपके प्राइवेट की से वो आप ये बॉक्स का पजल सॉल्व नहीं होते, तो वो आपके आउटपुट है नहीं, वो किसी और के आउटपुट है। वो किसी और का आउटपुट है। जब हाँ, आप अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उस पजल को, उसको उसको नहीं वहां से मूव कर सकते, तो फिर वो आपका बिटकॉइन नहीं है। फिर वो जो उसको सॉल्व कर लेगा वो उसका बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन एक ऐसा नंबर है जो जिसके खाते में लिखा है, और उस खाते का जो कंट्रोल अगर आपके पास है तो वो बिटकॉइन आपका है। अदरवाइज अगर जिसके पास है तो उसका उसका हो जाएगा। यस। सो
then like this is almost like all describes the entire transaction structure. One more step is like ये तो हो गया output, ये input क्या चीज है? This input is nothing but a pointer to another output. पॉइंटर मतलब ये इनपुट में जो डेटा है दैट इज पॉइंटिंग, मान लो यहाँ पे और एक ट्रांजैक्शन है जो ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, राइट, बट ब्लॉकचेन में है एक पुराना ट्रांजैक्शन, ये इनपुट जाके पॉइंट करता है उस ट्रांजैक्शन का एक आउटपुट को। सो अब ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, आपके पास 3 आउटपुट है, आई विश आई कुड लाइक मार्क इट हियर। सो इमेजिन यहाँ पे 3 प्रीवियस आउटपुट है, आपने एक ट्रांजैक्शन बनाया, ये तीनों आउटपुट को पॉइंट किया ये ट्रांजैक्शन में, एक आउटपुट आपने भेजा सचिन को, एक आउटपुट आपने भेजा विशाल को। सो दैट्स हाउ अ ट्रांजैक्शन इज, अ बिटकॉइन इज ट्रांसफर्ड। आपके खुद की आउटपुट इनपुट में पॉइंट हो रहा है और नए आउटपुट क्रिएट हो रहा है जिसका पजल सॉल्व करने वाला प्राइवेट की किसी और के पास है, किसी और के पास है। आप तब तक आपका आउटपुट को लिंक नहीं कर पाएंगे जब तक उस आउटपुट को सॉल्व करने वाला पजल की आपके पास नहीं है, राइट। सो ये इनपुट के अंदर आपका पजल की जाता है और आउटपुट का पॉइंटर जाता है, जैसे पॉइंटर लाइक वहां है मेरा आउटपुट, आउटपुट का हाफ वाला क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन यहाँ पे है, एंड if you are the right owner, then Bitcoin network will do the validation. That's the digital signature validation works. ये input के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ solution, उसका नाम basically बोलते हैं digital signature, and output जो बोलते हैं उसका नाम होते हैं script pub keys. So ये दोनों मिलके जब ठीक ठीक script pub key ठीक ठीक digital signature के साथ बैठेगा, फिर वो सॉल्व होके वो बिटकॉइन नोट के अंदर जो सॉल्वर्स हो जो वैलिडेट करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन को, वो बोलेगा कि ये सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। हर एक ट्रांजैक्शन को जो इनपुट वो जो आउटपुट प्रीवियस आउटपुट को वो पॉइंट कर रहा है अपना इनपुट में, उसको उसके साथ सॉल्व करना होता है, एंड देन ओनली नया आउटपुट क्रिएट हो सकता है। एंड दैट्स ऑल that is in essence of Bitcoin and its transaction and outputs. That's how the entire Bitcoin system works. So वाओ गाइस, अगर आपको ये मजा आ रहा है, ये इस तरीके की इन डेप्थ नॉलेज देख के आपको मजा आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और ऐसा कंटेंट अपने फ्रेंड सर्कल में और ट्विटर पे शेयर करिए। अभी हम लोग व्हाइट पेपर को शुरू ही करा है अपने, तो जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ही सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, उतना ही उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर करिए इसे ट्विटर पे और अपने फ्रेंड सर्कल में। जी राजश्री। Yeah. So in this second segment, we took a detour on like overview of the transaction. So in second segment, we basically he basically says that in words what we just discussed. We define an electronic coin as a chain of digital signatures. You could see like how the chain was forming. Like there was some previous output got linked with this output. This output again got linked in some transaction in future. That got again linked with some transaction in future. And as the time progresses, new transaction comes. So it's a chain of digital signatures. And each owner transfers the coin to the next by digitally signing a hash of the previous transaction and the public key of the next owner and adding this to the end of the coin. It's like technically trying to describe this this diagram. So एक transaction के बीच में क्या क्या होते हैं. So एक each owner transferred the coin to the next by digitally signing hash of a previous transaction. Like I want to point in my input कि कौन सा previous output को मैं solve करने की कोशिश कर रहा हूँ. Then I want to point कि किसको मैं ये output भेजूंगा. Then ये सारे मिला के जो data blob होगा, वो data blob को मैं sign करूंगा मैंने private key से. फिर वो जो वैलिड सिग्नेचर बैठेगा वो बैठेगा ट्रांजैक्शन की इनपुट में जाके, एंड वो ट्रांजैक्शन फिर हम लोग ब्रॉडकास्ट कर देंगे नेटवर्क में. And then it goes into few more details about the transaction and its model. And here he goes in this discussion of like we need a way for the payee to know that the previous owner did not sign any earlier transaction. Here comes the double spend problem.
what happens is like when you are like जब यहाँ पे आप पॉइंट कर ले हो प्रीवियस इनपुट को और ये आउटपुट आपके पास जा रहा है, ये ट्रांजैक्शन मैं बना रहा हूं, प्रीवियस आउटपुट मेरा था, इनपुट में सिग्नेचर मैंने डाला, आउटपुट में आपका नाम डाला। आपको कैसे पता कि ये जो प्रीवियस आउटपुट मेरा है उसको मैंने और कोई ट्रांजैक्शन जो आपको मालूम नहीं है, जो आपको मैंने दिखाया नहीं, उसमें ऑलरेडी पॉइंट करके रखा नहीं है? क्योंकि मेरे पास तो सिग्नेचर डिजिट प्राइवेट की है, तो मैं तो सिग्नेचर बना सकता हूं। एज अ पेई हाउ विल यू नो कि ये जो पॉइंट आउट होके आपके पास आउटपुट बना है ये यूनिक है? ये ट्रांजैक्शन ऐसी जो इनपुट यहां से पॉइंट हो रहा है, ये जो आउटपुट कंज्यूम हुआ इस इनपुट के बाजू में, ये आउटपुट और कोई ट्रांजैक्शन में कंज्यूम हुआ नहीं है। ये आपको किसी तरह जानना है, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे डबल स्पेंड प्रॉब्लम। मेक सेंस? So here in this paragraph he says we need a way for the payee to know that the previous owner did not sign any earlier transactions. For our purpose, the earliest transaction is the one that counts. So we don't care about the later attempts on double spend. अगर आपके पास वो कॉइन आ जाते हैं, यू नो वेरीफाइड कि ब्लॉकचेन में वो ट्रांजैक्शन घुस गया, आपके पास कॉइन आ गया, मैं अगर डबल स्पेंड करने की कोशिश करूं भी तो नेटवर्क रिजेक्ट कर देगा। सो वी जस्ट नीड टू एंश्योर जो लेटेस्ट वाला ट्रांजैक्शन है वही वैलिड है। फ्यूचर वैलिडेशन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे सिस्टम में, बट आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन मैं आपको दे रहा हूं यही लेटेस्ट वाला है, इससे पहले और कोई बना नहीं है ट्रांजैक्शन जो उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। बिल्कुल, तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है कि वही डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं पहली ट्रांजैक्शन जब एक बारी लेजर के अंदर लिख दी गई, एक बारी मैंने वो पहली ट्रांजैक्शन भेज दी और उसकी 4 कंफर्मेशन जब एक बार हो गया और 4 कंफर्मेशन के बाद एक बारी वो अपीयर करने लगा, तो उसके बाद कहा यह जाता है कि 4 कंफर्मेशन के बाद वो अमर हो गया। फिर आप उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उस ट्रांजैक्शन को आप हटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि 3 से 4 कंफर्मेशन की वेट कहा जाता है करने के लिए। तो इसीलिए एक बारी जब वो ट्रांजैक्शन हो गई तो उसके बाद अब आप दूसरी तीसरी अटेम्प्ट करते रहो, जो पहली ट्रांजैक्शन है वही मान्य होती है और वही एंटर कर ली जाती है। Is that what you're trying to say? Yes. So here he basically didn't say how to do that. He basically hinted on the solution to accomplish this without a trusted party. Transaction must be publicly announced, and we need a system for participants to agree on a single history in the order which they were received. Yes. So transaction को publicly announce करना होता है. And later on in some places in the paper he kind of like says the solution. How do you know something doesn't exist? In theory, in any kind of domain, how do you fundamentally ever know that something doesn't exist? The only answer to that question is by knowing everything that exists. Oh वाह, ये तो शायरी है। Yeah. How The do you design know of that Bitcoin is something poetic. doesn't exist? Actually The बिटकॉइन, मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर है ये भी एक पोएटिक वर्जन है। अगर इसके आप रिदम को देखो और इसके जिस तरीके से इसको बिल्ड किया है, इसको बनाया, इसके व्हाइट पेपर को भी लिखा गया है, वो भी एक बहुत ही पोएटिक अंदाज में लिखा गया है। एक सिंक्रोनाइजेशन है, एक सेंस है, उसका एक पर्पस लग रहा है। अब I was just in fact I just tweeted in the morning itself कि 3,192 वर्ड्स हैं टोटल बिटकॉइन के व्हाइट पेपर में, और ये हिस्ट्री में आज तक की सबसे छोटी रिसर्च वर्क है, सबसे छोटी किताब है या सबसे छोटा रिसर्च वर्क है, लेकिन इम्पैक्ट मतलब यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 7,500 वर्ड्स हैं उसके, और जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसको आप आई एग्री कर देते हो ना, उसमें भी 10,000 वर्ड होते हैं।
बिटकॉइन का व्हाइट पेपर सिर्फ 3192 वर्ड्स का है, तो ये छोटा सा है बट है बहुत पावरफुल। हाँ. So um, yeah, so that's what he reached up to this point. Ki chalo, like we know how to make transactions. This was a very well-known problem back then, how to create digital coin using digital signatures, cryptographic digital signatures. This was a well-understood problem. But here he seems like that's not enough. We need more. We need to some ways to ascertain कि आप ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री यूनिक है, ताकि वी नो कि डबल स्पेंड नहीं हुआ है. And then in the third section, he basically says like how to do that. The solution we propose, basically this one paragraph, like that's it, that's the solution. The solution is proposed begin with a timestamping server. A timestamp server works by taking a hash of a block, that is technical blah blah blah. It's basically saying like we create a digital ledger, we create a digital database where we take a blob of data, we take a chunk of data and commit it inside the data structure. And this is where the blockchain comes in. So a blockchain, this is how a blockchain looks conceptually. A blockchain has sequence of blocks. Every block can be computed into a hash. You can think of an hash is like a digital fingerprint. जैसे इंसानों की fingerprint होते, सारे लोगों का fingerprint अलग अलग होंगे, सारे लोगों का fingerprint unique होंगे. डिजिटल डेटा की फिंगरप्रिंट होते हैं जिसको बोलते हैं हैश. सो यू कैन थिंक ऑफ अ ब्लॉक एज अ डिजिटल ब्लॉब ऑफ डेटा. You can hash them, you get a fingerprint. When you create a new block, you also hash, include inside the data of that block the hash of the previous block. And then you go on creating this chain of blocks. So every block has its own hash and also includes the hash of the previous block. So when you are calculating the hash of this block, it takes a little bit time to grasp. When you're calculating the hash of this block, the hash of the previous block is already included inside this block data. So if you go and change this block, its hash changes, then this hash needs to include it in the next block. So next block's entire data, even if the next block's entire data remains same, the hash of the previous block changes, so the hash of the next block changes. And what you get out of this is the trick of the blockchain data structure, is what you get out of it is a propagation of tamper throughout the chain, from where the propagation started through the tip of the chain. And if you know the hash at the tip of the chain, and if you go and ask somebody, hey, I know this hash of this tip of the chain, this chain is very long, like it is like a 400 GB long chain with like 700,000 of blocks. I don't want to go and verify and check if each and every block, whether all the blocks are correct or not. Here's the hash of the tip of the chain. Does it match with the hash of your tip of the chain? If it matches, it's correct. If it doesn't, it's not. Why? And you can see, like you can check whether tamper has happened or not, or happened in the database or not. If you see the hash at the tip doesn't match, you go and ask, does the hash of the previous one match? Doesn't match. Does the hash of the previous one match? Doesn't match. Does the hash of the previous one match? Doesn't match. Does the hash of the previous one match? Yes, it matches. So tampered happened in this hash. And that's where all the hash got changed. So ultimately the tip hash didn't match. So this is the trick of like using blockchain, chain of blocks, which includes the hash of the previous blocks, which includes the hash of the previous blocks. That's how a chain is formed, all the way start to the first block that was ever created in Bitcoin, which is called the Genesis block. And you can see that it's very useful for tamper evident data structures. I just want to like quickly drop a fun fact that I don't see enough people talk about, is Bitcoin is not the first application of blockchain. The first application, the first useful application of blockchain in computer science was done by Linus Torvald, creator of Linux, and the system is called Git, that is used by every software developer out there in the world today. Git uses a structure called commit history, and every commit has a hash of the previous commit, which has a hash of the previous commit, which has a hash of the previous commit. And interestingly,
Git is the first distributed version controlling system which was required to create open source development of software. Right now, the entire software industry almost work on Git, whether you are open source or not, because it's a very nice collaborative tool. It allows peer-to-peer collaboration between different worker. It doesn't have to be used in software. You can use to create any digital documentation. You can use to create for book, write articles, whatever. It's just a collaboration tool. And that was the first thing that used the blockchain structure to solve some kind of consensus problem, because Linus Torvald was also hit by the same question. How do 100 developers sitting in 100 different countries come into agreement what is the current state of this software project? Very similar to the double spending problem, almost like a Byzantine generals problem, and it works on solving a consensus problem. How do 100 developers come in without asking any central authority? First thing, if there is a central server, then problem solved. It's not a problem at all. And he used this blockchain idea to come with the same kind of thing that eventually Satoshi Nakamoto ended up using in Bitcoin also. So here in this section, it basically describes this blockchain. He never uses the word blockchain. In the very end of the reference, this paper, this one in 1993, Improving the Efficiency and Reliability of Digital Timestamping System by Stoneta and Haver and Bayer. This is basically the paper that, oh, sorry, not this one. This one in 1991, How to Timestamp Digital Documents. This is the paper that basically first time described the blockchain idea, the blockchain data structure. This was an improvement over that. And but they didn't use the word blockchain in the title, and Satoshi didn't feel like ever using it in the paper. In fact, he called that data structure something, because in C++ code there is a data structure, uska kuch naam dena padega, and in the very early version of the code he called that time chain and not a blockchain. And later on he changed his mind, and later on in version probably in version release 1 also, he renamed it into a blockchain data structure. But this is what the data structure basically defines. The timestamp proves that the data must have existed at the time. And this is also not only just blockchain, it's also describing another idea called timestamping. And timestamping is very old idea. It predates digital cryptography. It predates computer system. People used to do timestamping in newspaper in early days. So what you have in newspaper, timestamping is like some way of publicly announcing that this particular data exists at this point in time. हाँ, And जैसे कि previously how बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे किडनैपर कहता था कि मैंने आपकी बेटे को किडनैप कर लिया है और मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो जो फादर होता था वो कहता था मैं कैसे यकीन करूं कि मेरा बेटा जिंदा है। वो कहता था अच्छा तुम्हें ये पता करना है ना, तो ठीक है। तो वो वीडियो कॉल पे एक न्यूज़पेपर और उसके लड़के को एक साथ खड़ा करके दिखाता था कि देखो आज का न्यूज़पेपर है, इसकी हेडलाइन देख लो और ये तुम्हारा लड़का साथ में खड़ा है। तो ये प्रूव हो जाता था कि हाँ यार ये न्यूज़पेपर तो आज का ही है, तो आज वो लड़का है, तो इसका मतलब लड़का एग्जिस्ट कर रहा है जो किडनैप हुआ है। तो इसका मतलब डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो लेके आए कि टाइम स्टैम्प का मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो डेटा एग्जिस्ट करता था। exactly तभी इनफैक्ट काफी लोग इसको टाइम चेन भी कहते हैं रादर देन सेइंग इट एज अ ब्लॉकचेन। बेसिकली टाइम स्टैम्पिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो जो सतोशी नाकामोटो ने इंट्रोड्यूस किया, और जो कि हर अगले एक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का टाइम स्टैम्प और जो उसका हैश डेटा है वो एग्जिस्ट करता है, और ये आपस में सारा कनेक्टेड है। तो ये जो इसको टाइम चेन भी कई लोग बोलते हैं, और एक डिबेट है ये भी, तो ब्लॉकचेन नहीं, बिटकॉइन एक्चुअली का जो नेटवर्क है वो टाइम चेन है। राइट, बिकॉज एसेंशियली ये टाइम स्टैंपिंग का काम कर रहा है डिजिटली, जो लोग न्यूज़पेपर में करते थे, राइट।
he created a digital ledger, digital database जहाँ पे वो वही चीज हो रहा है. So that's how he described how to assert history. टाइम स्टैंपिंग क्यों चाहिए? क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रांजैक्शन इसी ही डेट में बना है, इससे बाद नहीं, राइट? और इससे पहले ये ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था. सो वो प्रूफ करने के लिए यू नीड अ टाइम स्टैंपिंग मीडियम. सो गुड, वी गॉट अ टाइम स्टैंपिंग सर्वर. In this fourth work, like this is where he goes into proof of work. So proof of work is here he starts with this idea of like Adam Back's hash cache. And proof of work is a very simple concept. It's a way of mathematically proving that you have done some work. Why do you want to do that? Because you want to ascertain cost. Why do you want to do that? Because you want to make some activity costly. जैसे आपने शुरू किए थे ट्विटर में स्पैम बॉट के प्रॉब्लम, एंड एडम बैक जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा था 1998 में ईमेल स्पैम की प्रॉब्लम. सो कोई भी एक्टिविटी को अगर करने के लिए कुछ काम की जरूरत होते, कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत होते, देन दैट एक्टिविटी बिकम कॉस्टली. नाउ एनर्जी कैसे इन्वेस्ट हो सकता है? N number of ways. There are so many different numbers of ways to invest energy into something. Proof of work is a mathematical way, it's very simple mathematical way of proving that a certain number of computational cycle has been performed. Because without doing the computational cycle, you cannot come up with a proof, whatever that proof is. So a proof is a mathematical data. And if I can show you this proof, with that proof you can verify हाँ बंदे ने काम किया है. बिना काम करके ये proof generate नहीं हो सकता. So that's why it's called proof of work. And in Bitcoin, the proof of work idea is very simple. We talked about blocks and its hash, right? हर डेटा डिजिटल डेटाबेस का, हर डिजिटल डेटा का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट हो सकता है. उसको हैश फंक्शन के थ्रू अगर प्रोसेस करे तो, एंड जो आउटपुट होते हैं उसको बोलते हैं हैश और डिजिटल फिंगरप्रिंट. So a block, a Bitcoin block is also a digital data. So if you hash it, you will get an hash output. What is proof of work in Bitcoin is like सतोशी ने बोला कि ये हैश का पहला जो n नंबर ऑफ डिजिट, पहला 10 डिजिट मान लो, कि 100 डिजिट मान लो, कि 5 डिजिट मान लो, ये 5 डिजिट n नंबर ऑफ डिजिट को 0 होना है. एंड आप अगर एक ब्लॉब ऑफ डेटा को लेते हो, उसको हैश करते हो, उसको जो आउटपुट आता है वो टोटली रैंडम आता है. आप उसका आउटपुट गेस नहीं कर पाते. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हैश फंक्शंस. If you can guess, then it's not a good hash function. So you take a blob, you hash it, get a random data. But आपका टारगेट क्या है कि आपको पहला n डेसिमल प्लेसेस और n बाइनरी डिजिट्स 0 लेके आना है. बट आपका आउटपुट तो रैंडम है, 0 नहीं आया उसमें. आपने फिर कोशिश की. एक वैल्यू होते हैं जिसका नाम है तो है नॉन्स. वो कुछ नहीं होते, वो एक काउंटर है. 0 से स्टार्ट होते, जब तक आपका वो n फर्स्ट 0 वाला हैश मिलता नहीं है, तब तक यू कीप इंक्रीजिंग द नॉन्स वैल्यू. 0 किया, पहले 0 से सेट किया वैल्यू को, ब्लॉक को हैश किया, n नंबर ऑफ बाइट्स हैश डिजिटल फिंगरप्रिंट का 0 आया कि नहीं, नहीं आया, n नॉन्स गोज टू 1, हैश 0 आया कि नहीं, नहीं आया, नॉन्स गोज टू 2, नहीं आया, nonce goes to 3, nonce goes to 4, nonce goes to 5. Nonce goes on iterating as long as you don't get the n number of zeros in the hash of the block. And ये पूरा ही random process है. You cannot guess कि कौन सी nonce में जाके मुझे इतना नंबर का 0 मिलेगा. बट अगर आपको इतने नंबर का 0 मिलता है इटरेशन करते हुए, एवरीबडी कैन वेरीफाई कि वही नॉन्स में उतना नंबर का 0 है. क्योंकि नॉन्स का वैल्यू मालूम चल गया है कि 1,50,02,599 नॉन्स वैल्यू में जाके आपको पहला 5 डिजिट 0 मिला है. जस्ट अ सेकेंड.
या एंड यही काम माइनर करते हैं. व्हाट इज माइनिंग? माइनिंग और कुछ नहीं है, ये नॉन्स वैल्यू को जीरो से चालू करना होता है. जब तक ब्लॉक हैश का पहला n नंबर ऑफ डिजिट जीरो नहीं आते तब तक इटरेट करते जाओ. And the miners are deploying specialized hardware called ASICs, application specific integrated circuit, जो हार्डवेयर स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ये हैश फंक्शन, ब्लॉक का हैश फंक्शन एज फास्ट एज कैलकुलेट कर सके. And that's how the entire network is working. So here he's describe what a proof of work is. What does abhi miner pehle koi bhi node, what does the node need to do in order to create a valid block? A block tak valid nahi hote जब तक उसका पहला n डिजिट जीरोज नहीं है. पहला n डिजिट ऑफ द हैश, ब्लॉक का जो हैश है वो जीरो नहीं है. So this is that part of the segment. Any question on this? I think this is very kind of like involved problem. Takes some time to digest it out. No, that's okay. Okay, cool. And this is the coolest part. Like this is probably 2 lines, and I think many of the, यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री में जा सकते हैं. Many of the earlier implementation of almost Bitcoin but not Bitcoin. One of them Satoshi ने यहाँ पे रेफरेंस किया था is Way Days का बी मनी, जो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 1998 का. ये बी मनी में ऑलमोस्ट बिटकॉइन लाइक सिस्टम डिस्क्राइब किया गया है, but they couldn't solve one of the most intriguing part of this problem is difficulty adjustment. सारे नोड जब माइन कर रहे हैं एंड अगर मैं अपना कंप्यूटेशन पावर बढ़ा देता हूं तो बाकी लोगों से अगर ज्यादा इटरेट करने लगता हूं मैं, तो मैं बहुत जल्दी ब्लॉक ढूंढ पाऊंगा. ये ब्लॉक का जो टाइम इंटरवल है इसको फिक्स कैसे करना है? And the way to do that is difficulty adjustment. वो जो first n number of zeros को zero होने की बात कर रहे थे हम लोग, ये n का वैल्यू जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा नंबर ऑफ इटरेशन आपको करना पड़ेगा वो वैल्यू में पहुंचने के लिए. राइट. एंड प्रोटोकॉल में ये डिफाइन करते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल चलता है वो प्रोटोकॉल आपको डिटरमाइन करके बोलते हैं कि इस मोमेंट में वैलिड ब्लॉक बनाने के लिए कितना n का वैल्यू क्या होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ डिजिट चाहिए जीरो, एंड वो डिटरमाइन करते ब्लॉक बनाने का डिफिकल्टी कितना है. इसको कैसे यूज किया जाता है नेटवर्क में? बेसिकली इन दिस पार्ट he described to compensate for increasing hardware speed and varying interest in running nodes over time. The proof of work difficulty is determined by a moving average targeting an average number of blocks per hour. If they are generated too fast, the difficulty increases. अगर प्रोटोकॉल देखता है कि लास्ट कुछ 2 हफ्ते की विंडो में there is a certain amount of time 2016 block it takes, लास्ट 2 हफ्ते की विंडो में एवरेज ब्लॉक का इंटरवल कितना था? 10 मिनट था कि 10 मिनट से ज्यादा था या 10 मिनट से कम था? अगर 10 मिनट से कम होते इसके मतलब नेटवर्क में ज्यादा ब्लॉक आ रहे हैं, सो वो प्रोपोर्शनेटली डिफिकल्टी बढ़ा देता है अगले हफ्ते के लिए. अगर 10 मिनट से ज्यादा है तो नेटवर्क में जितने ब्लॉक आना चाहिए उससे कम आ रहा है, तो वो प्रोपोर्शनेटली डिफिकल्टी घटा देता है अगले हफ्ते के लिए. And over time, the network maintains this consistent level of average 10 minutes a block. कभी कभी 5 मिनट में ब्लॉक आ जाते हैं, कभी कभी 20 मिनट में आते हैं, but on the average, if you take the statistical average, it tends towards 10 minutes. I think like there is one good very prominent Bitcoin developer who kind of made a public comment in an interview who said like this line over here is like the amount of information he couldn't figure out like how to solve Bitcoin. Like if he just knew how to use the difficulty adjustment problem, he almost created something like Bitcoin.
And this is the funny part of Satoshi. Like, there is no way he didn't knew like this is the crucial part of the entire design, and he just spent 2 lines describing it. Like, it could have like Yeah, made the yeah, yeah. full equation and made the full argument like why this is important, but he just made 2 lines and went away. इसको मैं थोड़ा फिलोसफिकल एंगल से समझा देता हूँ लोगों को। थोड़ा सा मेरी आदत है राजश्री जी कि मैं ना चीज़ों को थोड़ा एनालॉजी देके समझा देता हूँ। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके पीछे जो घर है, उस घर के बेसमेंट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सोना है, बेसमेंट के नीचे बहुत ज़्यादा सोना है। आपने ये बात अपने नौकर को बोली कि यार ऐसा है, मैं तो अकेला निकाल नहीं पाऊंगा, चलो दोनों मिलके निकालेंगे। तो आप दोनों ने सोना जब निकालने लगे तो वहां पे और 2 लोगों को पता लगा, और 3 लोगों को पता लगा, और 4 लोगों को पता चला, और अल्टीमेटली वो जल्दी जल्दी आप वहां पे सोना जो आप निकाल सकते थे वो लोग अपने ज्यादा लेबर लेके आए, ज्यादा मशीनरी लेके आए। इसका मतलब जो वहां पे सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा जिसके पास लेबर होगी, सबसे एडवांस माइनिंग उसकी खोदने की ताकत जिसके पास ज्यादा होगी, उसके पास वो गोल्ड ज्यादा आ जाएगा, राइट। तो जब भी पैसे का मैटर जहां आता है, जहां पे रोकड़ा, मनी मनी का मैटर जब ज्यादा आता है, बिटकॉइन क्योंकि एक प्रीशियस चीज होने लगी, कि बिटकॉइन एक प्रीशियस एसेट होने लगा जिसकी डिमांड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इसके अंदर जो ग्रीड है वो पैदा होती है। ग्रीड एक ह्यूमन साइकी है, हर बंदा चाहेगा कि वो बिटकॉइन को वो ज्यादा माइन कर ले। तो तो सतोशी नाकामोतो को ही पता था कि इसके अंदर पहले छोटे से माइनर शुरू होगा और ये धीरे 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 एडवांस लेवल पे, और ज्यादा लोग अलग अलग माइनिंग इक्विपमेंट्स, एडवांस माइनिंग इक्विपमेंट्स, और ज्यादा हैश पावर की होड़ मचेगी। और जब ये ऐसा होगा तो एक दिन ऐसा भी होगा कि दुनिया की शक्तिशाली कंपनीज जिनके पास डॉलर्स इतने हैं कि देशों को खरीद लें, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर उतरेंगे। कल को जेपी मॉर्गन भी उतर सकता है, कल को गोल्डमैन सैक भी उतर सकता है, तो उनके पास तो बहुत सारे डॉलर है। कल को यूएस, अमेरिका कह सकता है कि सारे बिटकॉइन मैं माइन करूंगा, कल को वो भी उतर सकता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी, क्या वो बिटकॉइन को माइन कर ले जाएगा, क्या वो बिटकॉइन को ले जाएगा? नहीं। तो सतोशी नाकामोतो ने का डिफिकल्टी एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आया कि जैसे ही कोई ज्यादा बिट ब्लॉक्स को माइन करने लगेगा, ज्यादा तेजी से माइन करने लगेगा, जल्दी अगर ब्लॉक सॉल्व होने लगे, तो 2 हफ्ते के अंदर नेटवर्क ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करेगा, ओ ये तो 10 मिनट में होने चाहिए थे एवरेज, लेकिन यहाँ तो जो एवरेज आ रहा है वो 7 मिनट का आ रहा है, कि एवरेज टाइम टू माइन द ब्लॉक इज 5 मिनट, 6 मिनट आ रहा है। ऑटोमेटिकली उसकी जो डिफिकल्टी, जो पजल सॉल्व करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बढ़ जाएगी। फिर अगले 2 हफ्ते बाद फिर रिव्यू मीटिंग बैठेगी, ऑटोमेटिकली नेटवर्क रिव्यू करेगा, वो देखेगा अच्छा अब ठीक है, अब जो है ज्यादा टाइम लग रहा है, 15 मिनट लग रहे हैं, इसको कम कर दो डिफिकल्टी एडजस्टमेंट को। ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस है, ये कोई सॉल्व नहीं कर पाया था सतोशी से पहले। बहुत क्लोज आ चुके थे लोग बिटकॉइन जैसी चीज बनाने के, लेकिन जो ये डिफिकल्टी एडजस्टमेंट है, आप जानते हो ये डिफिकल्टी एडजस्टमेंट भी नेचर की देन है। अब आप कहोगे काशिफ सर आप फिर आध्यात्मिक हो गए, नहीं। अगर आप नेचर को देखो, नेचर को कैसे पता लगता है कि कहीं पे बारिश की जरूरत है? बारिश होती है, बारिश पड़ती है, उसको तृप्ति मिलती है जमीन को, बारिश रुक जाती है। फसल को जितनी जरूरत पड़ती है उतनी बारिश होती है, बारिश रुक जाती है। अगर आप देखो तो नेचर भी अपने काम को वेरी करता रहता है, कम ज्यादा करता रहता है अपने। ये जो डिफिकल्टी एडजस्टमेंट है, ये नेचर की देन है। उस नेचर को उठा के उसने नेटवर्क के अंदर रेप्लिकेट कर दिया। हर चीज नेचर से प्रभावित है बिटकॉइन की। बिटकॉइन की एनर्जी के सोर्सेस से लेके उसकी डिफिकल्टी एडजस्टमेंट भी नेचर से प्रभावित है। I'll जो just लोग, add a हाँ तो जो ये आज की जो कन्वर्सेशन जो लोग सुन रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है कि इनमें से 4-5 लोग
ये बोले कि सर अब कुछ नहीं करना लाइफ में, अब सिर्फ बिटकॉइन करना है, बस एंड ऑफ स्टोरी सर। That will be achievement for me if I अगर can make like एक आदमी भी आज ये कहता है कि सर मुझे किसी ऑल्ट कॉइन में नहीं जाना, मैं फालतू में, मैं भ्रमित था सर, मेरे को, मैं फालतू में इतने पैसे ऐसे वेस्ट कर रहा था, मुझे आइडियली आज के सेशन के बाद मुझे सर बिटकॉइन करना है प्रोबेबली, अगर एक बंदा भी ऐसा आता है तो ये इस सेशन के थ्रू जागरूकता फैलेगी कि यार बिटकॉइन का महत्व क्यों है। या nicely put and अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा वो सोने वाला एनालॉजी, आई लव्ड इट, दैट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। इट्स लाइक इमेजिन अ इंटेलिजेंट सोना जिसको मालूम है कि कितने लोग आके उसको खोद रहे हैं, सो जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं वो जमीन में गहरा घुसता जा रहा है, हाँ, और सोना उतना ही रेट में निकल रहा है, चाहे 100 लोग खोदे, 1000 लोग खोदे या 5 लोग खोदे। So the Sona knows how to like issue itself, and this was the problem. And if somebody asks me what is the innovation of Bitcoin, I would say this two line is the innovation of Bitcoin. yes, Nobody yes. has been able to like come up with how to solve the issuance problem, how to make the system balance each other in a self-balancing way. अगर वो अपने आप को balance नहीं कर पाएगा तो distributed nature में वो disintegrate कर जाएगा, and you cannot have a sustainable system. यही प्रॉब्लम ऑल्ट कॉइन्स की है। जब हम डिफरेंस को क्यों, प्रॉब्लम क्या है, जब मनी जहां पे आ जाता है वहां पे ग्रीड आ जाती है, और जो ग्रीड ये कहती है कि जिस चीज की ज्यादा डिमांड है उसकी सप्लाई बढ़ा दो, उसकी सप्लाई बढ़ा दो। तो जब किसी प्रोटोकॉल के अंदर 4 लोग बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इसकी सप्लाई बढ़ा दो, इसके अंदर ये चेंज कर दो, इसके अंदर वो चेंज कर दो, अब इसके डीएनए में ये चेंज कर दो, तो वो नेटवर्क वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको श्योरिटी नहीं है कि आज जो सप्लाई वहां कमिटेड है वो अगले 10 साल बाद भी क्या वही सप्लाई रहने वाली है ना। बिटकॉइन को खास बात ये है कि बिटकॉइन के अंदर जो सप्लाई है वो इस तरीके से एक तो फिक्स्ड है, और जो ब्लॉक्स की भी जो इशुएंस रेट है, जो बिटकॉइन का इशुएंस रेट है, वो इस तरीके से डिजाइंड है कि वो अपने जो सेट स्टैंडर्ड है उसका 10 मिनट, उससे वो जैसे ऊपर नीचे वेरी करता है, डिफिकल्टी एडजस्टमेंट भी उस हिसाब से वेरी करती रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो 3 लाइनें हैं पूरे व्हाइट पेपर की, मैं अगर ये कहूं कि इंसान के अंदर दिल होता है, बिटकॉइन का जो के व्हाइट पेपर का दिल इन 3 लाइनों में है। Truly. And the analogy with nature goes farther, much beyond than just this into Bitcoin is a weird thing. I have been like doing this 4 साल से कर रहा हूँ, and अभी भी like नए analogy weirdly मिलता है, and as you have said, like it goes into spirituality, it goes into lifestyle, It goes into spirituality. it goes into changes you, it changes a lot of stuff. And I would suggest the viewer to check out this article called Bitcoin and Mycelium. It's a 4-part article describing the similarities between the mushroom fungal network of nature and the Bitcoin network. And there are some uncanny similarities about how the nature works in technical levels and how the mushroom and the fungal network, as we found out very recently in nature, how they work. And but anyway, that's a topic for another day. And if I'll suggest viewers to go and take it on their time. वो नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे, उसको भी कवर करेंगे। अब यू विल बी फ्रीक्वेंटली कमिंग टू आवर चैनल। मजा आया मुझे इस सेशन करके। इनफैक्ट अगर आप राजश्री को बार बार देखना चाहते हो तो आप क्या कमेंट करके बता सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप ये लिखिए कि वी वांट राजश्री, वी वांट राजश्री। अगर आप लिखोगे तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको ये इनको दोबारा आपको बुलाना है। जी। Okay, so let's go further. We are almost towards the end. So section 5 that describes, so abhi like we have like taken up most of the heavy lifting. सारे जो complicated subjects थे पेपर के वो हम लोग कवर कर चुके हैं। एंड सेक्शन 5 में वो जाके डिस्क्राइब करते हैं कि नेटवर्क क्या है, नोड क्या है, नोड क्या क्या करेंगे, क्या क्या काम है, ड्यूटीज क्या है नोड का। And these are the major steps that a node takes. A new transaction are broadcast to all nodes.
कोई नया ट्रांजैक्शन अगर आते, जो भी नोड नया ट्रांजैक्शन बना रहे, वो बेस्ट एफर्ट के बेसिस से सारे नोड को ब्रॉडकास्ट कर देगा, कोई एक पर्टिकुलर जगह में नहीं भेजेगा। हर नोड का इंसेंटिव, हर नोड का टेंडेंसीज ये रहेगा कि वो जितने नोड को ब्रॉडकास्ट कर सके उतना अच्छा है। ईच नोड कलेक्ट न्यू ट्रांजैक्शन इनटू अ ब्लॉक। हर एक नोड हर एक टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सारे नए नए ट्रांजैक्शन आ रहे हैं। हर एक नोड वो ट्रांजैक्शन को अपने एक बकेट होते हैं जिसका टेक्निकल नाम है मेम पूल, वो बकेट में स्टोर कर रहा है। एंड जब लास्ट ब्लॉक निकला, उसके बाद ही, द मोमेंट द लास्ट ब्लॉक निकला, उसके बाद ही हर नोड अपने जो बकेट है उसमें से एक बंच ऑफ ट्रांजैक्शन निकाला, उसका ब्लॉक बनाया और प्रूफ ऑफ वर्क करने लग गया। जिसको सबसे पहले प्रूफ ऑफ वर्क मिला, सॉल्व कर दिया, वो ब्रॉडकास्ट कर दिया। एंड जब ब्रॉडकास्ट हुआ, बाकी नोड को पता चल गया, अच्छा ब्लॉक नंबर 500 ब्रॉडकास्ट हो चुका है, सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन ब्लॉक नंबर 500, बट वो तो ब्रॉडकास्ट हो चुका है, तो मैं और ये नहीं जीत सकता, तो आई वर्क ऑन ब्लॉक नंबर 501. So every block has a hash of the previous block. That's how blocks are connected with each other. So मैं जब ब्लॉक नंबर 501 बनाऊंगा, तो वो ब्लॉक नंबर 500 का जो हैश है उसको इंक्लूड करेगा ब्लॉक के डेटा के अंदर। फिर मैं ब्लॉक नंबर 501 प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग करने लग गया। So this is what it describes. When a node finds a proof of work, it broadcasts the block to all nodes. Node accept the block only if all transaction in it are valid and are not already spent. So वो चेक करता है कि वैलिड डिजिटल सिग्नेचर है कि नहीं, पहले से वो ट्रांजैक्शन स्पेंड हो चुका है कि नहीं। सो एक जो बंदे की ओनरशिप है सिर्फ वही ने ट्रांजैक्शन बनाया, दो डबल स्पेंडिंग नहीं हुआ है। And then node expresses their acceptance of the block by working on creating the next block in the chain using the hash of the accepted block as the previous hash. So अगर ये ब्लॉक वैलिड होता है, मेरा नोड मैं रन कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि नोड नंबर 500 मेरे पास आया, ब्लॉक नंबर 500 मेरे पास आया, सारे ट्रांजैक्शन वैलिड है, आई एक्सेप्ट इट, इट्स अ वैलिड ब्लॉक। How do I show my acceptance? By creating block number 501 on top of block number 500. What does it mean by creating one block on top of another? This new block will have the hash of the previous block as its data content. So ये ब्लॉक अगर चेंज हो जाते, उसका हैश चेंज हो जाएगा, ये ब्लॉक नया ब्लॉक के अंदर वो प्रीवियस ब्लॉक का हैश है, तो वो हैश भी चेंज हो जाएगा, तो नया ब्लॉक का हैश भी चेंज हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जो ब्लॉक बना है वो भी चेंज हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जो ब्लॉक बना है वो भी चेंज हो जाएगा। ऐसे करते करते सारे चेंजेस प्रोपगेट होके एकदम टिप तक आके पहुंचेंगे। सो दैट्स अबाउट द चेंजेस। बट इन नॉर्मल प्रोसीड्यूर में क्या होते हैं कि नोड्स को ब्लॉक मिलता है, हर एक नोड ऑल द टाइम ब्लॉक माइन कर रहा है। अभी आज के टाइम के जैसा नहीं है कि आपके नोड आपके घर में है एंड माइनर्स आपके इंडस्ट्री में जाके माइन कर रहे। उस टाइम पे हर एक नोड माइन करता था। एंड here's the consensus algorithm, like the algorithm that solves the Byzantine generals problem. It says nodes always consider the longest chain to be the correct one and will keep working on extending it. If two nodes broadcast different version of the next block simultaneously, some nodes may receive one or the other first. In that case, they work on the first one they received, but save the other branch in case it becomes longer. The tie will be broken when the next proof of work is found and one branch become longer. The nodes that are working on the other branch will then switch to the longer one. This is one part where I have seen many developers who are trying to wrap their concept of like blockchain and how the entire network is achieving consensus at each moment of time. This is the basic part where the confusion happens. It's like, सपोज इंडिया में बैठ के एक नोड माइन कर रहा है, उसके पास आया है नोड नंबर 501। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के एक नोड माइन कर रहा है, उसके पास आया है नोड नंबर 501। ओके, इंडियन वाला नोड नंबर 501 मिला एंड नोड नंबर 502 बना रहा है। ऑस्ट्रेलियन वाला के पास भी नोड नंबर 501 मिला, वो भी नोड नंबर 502 बना रहा है, क्योंकि इंडियन वाले का नोड 502 अभी तक ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है नेटवर्क में, तो ऑस्ट्रेलियन वाले को मालूम नहीं है कि 502 और कोई बना रहा है। इनफैक्ट 502 हजारों लोग बना रहे हैं ऐसे।
जब what happens when India and Australia both broadcast 502 different version of 502 at the same time in the network में अब दो वर्जन ऑफ 502 हाइट का ब्लॉक आया है, 502 नंबर का ब्लॉक आया है. कौन सा वैलिड है? दोनों वैलिड है, दोनों का प्रूफ ऑफ वर्क सॉल्व है, दोनों में वैलिड ट्रांजैक्शन लिया हुआ है. नाउ डिसीजन कैसे होगा कि ये वाला ब्लॉक वैलिड है या ये वाला ब्लॉक वैलिड है? The decision never happens instantaneously. The decision emerges over time in the form of whatever is part of the longest chain. एंड ऐसे जब साइमल्टेनियस होते कि इंडिया से 502 निकला, ऑस्ट्रेलिया से 502 निकला, सो बाकी जो नोड है वो कौन सा एक्सेप्ट करेगा, मतलब कौन सी नोड के ऊपर, कौन सी ब्लॉक के ऊपर बेस करके 503 बनाएगा, दैट इज डिसाइडेड ऑन कि उसको कौन सा पहले बेर दिखाए. नाउ इंडिया के नजदीक जो जो लोग हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश वाले लोग इंडिया वाले 502 देखे पहले. ऑस्ट्रेलिया के नजदीक जो लोग हैं, न्यूजीलैंड वाले लोग, वो लोग ऑस्ट्रेलिया वाले 502 देखे पहले. सो न्यूजीलैंड विल बिल्ड 503 ऑन ऑस्ट्रेलियन वर्जन ऑफ 502. एंड तब तक वो जो बिल्ड कर रहा है, तब तक इंडियन वाला 502 उसके पास पहुंच गया है. उसको मालूम चला, अच्छा दो वर्जन ऑफ 502 आया है एंड आई एम बिल्डिंग ऑन ऑस्ट्रेलियन वर्जन ऑफ 502. But that might not end up in the longest version of the chain. So he keeps on कि इंडियन वाला 502 भी रख लेते. अब इंडिया और उसके आजू बाजू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दे आर वर्किंग ऑन इंडियन वाला 502 के ऊपर 503 बना रहे, एंड उनके पास ऑस्ट्रेलियन वाला 502 आया, एंड दे से लाइक ओके नाउ वी हैव अ पोटेंशियल कैंडिडेट, पोटेंशियल डुअलिटी कि मेरा इंडियन वाला सही है या ऑस्ट्रेलियन वाला सही है. तो यहाँ पे डिसीजन नहीं होगा, ये लोग दोनों रख लेंगे एवं एंड हर नोड ऐसे ही दोनों ब्लॉक को इकट्ठा करके रख लेंगे. एंड इवेंचुअली ये जो दो ब्लॉक बना 502 हाइट में, नाउ दे आर एग्जिस्टिंग टू डिफरेंट बिटकॉइन ब्लॉक्स. दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल फॉर्क. लोग normally, if you are in cryptocurrency industry, you have heard about hard forks, soft forks. There is another kind of natural forks that happens all the time in the network, is called natural forks, and this is when a natural fork happens. And the natural fork is solved eventually, कोई सा भी ब्रांच जाके longest होता है. Whenever one branch become longer than the other, everybody shifts to that branch. They take that the longest branch as the most valid branch. That is the consensus algorithm, and that's how everybody, even temporarily, nodes are bifurcating into different version of same block height, different versions of blocks at the same height. Eventually they converge by asking what is the longest. जब तक longest नहीं है तब तक they keep on having both. I don't know if that makes sense or not. I don't know if I did a good job explaining it, but that's how the consensus emerges in the network. The consensus is never decided. The consensus is not an algorithm. The consensus is not a code. The consensus is just one line of concept which says like whatever is the longest chain will be considered as the correct one. And if everybody follows this rule, everybody will be on the same track. Right. सो मैं तो ये कहूँगा कि ऑडियंस को कि अपना दोबारा से इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बारी, इसको देखने के बाद, फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. Yeah, I guess for the rest of the part we will quickly go through because it's gonna be little bit technical and not much conceptual after that. And so in this section of the incentives, आपने जैसे शुरू किया था पहले, like when money is involved, greed is involved. When greed is involved, you need to have alignment of economic incentives. And ये incentives अगर align नहीं होते तो eventually either network disintegrate हो जाएगा या फिर network centralized हो जाएगा. And as you have pointed out, I feel many of the crypto industry and the blockchain project are facing with the problem of this kind of incentivizations, and people are not like carefully figuring out what should be the incentives of different participants be and what kind of effect incentives plays in this kind of distributed networks. So here Satoshi goes on how he managed to balance the incentives
And it basically talks about two parts in two ways. In miners are incentivized. One is block reward, one is transaction fees. ब्लॉक रिवॉर्ड हर 4 साल में हाफ होता रहता है, जिसको हाविंग बोला जाता है. And transaction fees are the fees that you pay to get your transaction included in the blocks. So miners also get reward. Eventually mining reward zero ho jayega, and the miners will be incentivized with transaction fees only. And so that's the incentive part. Here he goes on little bit of scalability, because he knew that fundamentally this structure doesn't scale, and he knew that this question is going to come up with scalability, how to scale this system. People who are in this space, they already know, like we have had like the scaling debates and discussions, and there are many different crypto projects that spawned up as a better version of Bitcoin, specifically on these questions of scalability. Sometimes people think of scalability is only throughput, but here Satoshi was talking about scalability in terms of how much size of the data you need. Because remember the first thing we talked about, how do we know that something doesn't exist? By knowing everything that exists. So by knowing everything that exists is a costly affair. So here he goes into the cost of how much does it gonna cost in order for a computer to know how much disk space it's gonna take. Hard disk में कितना जगह लगेगा to know कि everything that exists in the Bitcoin network, because that's the only way to achieve distributed consensus. So here he made some rough back of the napkin calculation, and he said like the way the Moore's law is approaching the computational efficiency, size of the hard disk is increasing. He doesn't see size of the network is a problem. He doesn't talk about throughput though. I think what happened eventually in practice is like size of the blockchain actually wasn't the scaling issue. The scaling issue became the throughput, and that's where like layer 2 solution and side chains and other kind of solutions that you can attach on a blockchain came up as probable ways of solving the throughput problem in Bitcoin. Anything you want to go deeper inside this question, or we can move on? No, we can move on. I think most of the points we have covered. Yeah. And in the Here, like this is like there are many people who are interested in technically understanding the white paper. There are many parts where Satoshi went wrong. This is the big part where Satoshi went wrong. And he kind of envisioned that a simplified payment verification system can be made where you do not have to run full node inside your mobile. His idea how mobile Bitcoin network will run is like something called a simplified payment verification system, or light node, or light client as you want to call it. Turns out like you cannot do it as part the design of the Bitcoin blockchain was done. Bitcoin blockchain जिस तरह से डिजाइन किया गया था, उस डिजाइन में you couldn't do it. And for a long time we didn't had simplified SPVs in the ecosystem. Recently, around 2017, we got a new Bitcoin improvement proposal, BIP 157 and BIP 158, which describes a way of doing simplified payment verification in Bitcoin, and lots of projects are using it. If you're using Breeze wallet, which is a Lightning and Bitcoin wallet, that uses simplified payment verification system, or it's called Neutrino. LND, जो Lightning specification बनाते, Lightning Labs, they have come up with the implementation of Neutrino, and there is a Rust version of implementation of Neutrinos that's been working on, and I am actually actively working on creating a more robust and Rust way of doing Neutrino and BIP 157 things. But this is what this simplified payment verification system is describing. When people ask like, you cannot run a full Bitcoin node in mobile, so mobile mein log kaise karenge? And this was Satoshi's answer, which turned out wasn't feasible. So, and combining and splitting value, this is where he goes on like the internal of the transaction structures. What does it mean to have a coin? What does it mean to have a Bitcoin? How do you combine two Bitcoin together? And how do you split them together? And
this is where it goes into the there is one term that will come up over and over again if you want to go into Bitcoin technicals, is UTXOs, unspent transaction outputs, which is nothing but these output structures that we have already discussed. So an output structures that hasn't been yet linked by an input structure is called an UTXO, or an unspent transaction output. It's not spent, it's unspent. That's why unspent transaction output. And that's what a Bitcoin is. When you have your mobile wallet, is basically a software that tracks of all the UTXOs that you own. Your hardware wallet is a software that tracks all the UTXOs that you own. If you run a Bitcoin node tracks all the UTXOs that exist in the world in the Bitcoin network. So every Bitcoin node has a copy of a set of all the UTXOs that are out there. So this is the part of like describing a little bit of UTXO. Again, he doesn't use the word UTXO. The word UTXO came up later, probably like Satoshi used it or somebody else in the development channel, where they termed these output structures as UTXOs. And then he goes into the privacy of the network. He realized, because everybody needs to know everything, because that's the only way you know that something doesn't exist, what is the privacy implication of it. So everybody can see like balances of everybody else. And in this way, like he describes the entire Bitcoin system as pseudonymous. It has identity, but it's not anonymous. It's pseudonymous in the sense like if you can attach physical identity, real identity, with a pseudonym, which is public keys inside Bitcoin network, you can have like linkage of information. So you can use that to disclose financial informations. You can use that to disclose lots of different kind of informations that are sometimes necessary for operations of business, corporates, and different kind of things. And but you can also have it in a pseudonymous way without linking the informations together. And then at the very end, he goes into a mathematical calculations. We will not talk about it because it's deep probability. And he goes into some calculations and some C code and some simulations. And what it shows is like what you also talked about few minutes ago, is like conformation, 3 numbers of conformations or 4 numbers of conformation. Here in this table, you can easily see like, in this table, this P is the probability of attacking the network by an adversary, and Z is the number of conformation you're waiting for. And as you go, as the number of conformation increases, probability of an attacker double spending or attacking the network or frauding somebody goes exponentially decreasing. So that's why the number 4, 5, 6 of confirmation time is basically arbitrary. It's a convention. There is no hard-coded rule. But the idea is, as you go deeper into the blockchain, the probability of doing a double spend decreases exponentially. And that describes the security of the system. And in the end, he just basically concludes with a nice short paragraph saying like, we have solved a 40-year-old outstanding problem in computer science, and that's just it. I can't hear you. So guys, this was amazing. मैंने एक चीज पहले इस वीडियो से पहले एक डिस्क्लेमर ये दिया था कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट हिस्टोरिक वीडियो एवर, यू नो, क्रिएटेड इन द इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम, बिकॉज आज से पहले जब से क्रिप्टो इकोसिस्टम बना है, ये अकेला वीडियो है जिसने बिटकॉइन का जो वाइट पेपर है उसको इतनी डिटेल और डेप्थ में कवर किया है. और ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाली पीढ़ियों में, जब 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, जब बिटकॉइन एक घर घर की बच्चे यूज कर रहे होंगे, इनफैक्ट यू नो लाइटनिंग नेटवर्क पे बिटकॉइन से वो अपने टॉयज खरीद रहे होंगे, पेमेंट्स कर रहे होंगे, ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, उस टाइम पे लोग जब बिटकॉइन को सीखने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्ली दे विल गो बैक टू दिस वीडियो एंड दे विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द व्हाइट पेपर एंड व्हाट डज इट सेज. कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो हिस्टोरिक हो जाते हैं, जो पेज बन जाते हैं,
दिस वीडियो इज गोइंग टू बी दैट इसके एग्जिस्टिंग जो नंबर आएंगे, जो अभी नंबर्स आएंगे, वो उतने हो सकता है कि लोअर साइड पे हो, लेकिन जैसे जैसे एज द टाइम प्रोग्रेसेस, as this ecosystem grows, this video, you will see that this is going to be the one video, because I can bet at this moment that nobody has covered the Bitcoin white paper in so detail and so much of depth. And kudos to you, Rachri, for taking out time and giving it all. इट्स इज ये वही कर सकता है जो इसमें ट्रू सतोशी बिलीवर है। मैं बिटकॉइन बिलीवर नहीं कहूंगा, सतोशी की लाइफ को जिसने एम्ब्रेस किया। सो प्रॉब्ली वो विजिबल है, वो पैशन विजिबल है कि विदाउट हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर 2 आवर्स आई कैन सी यू स्पीकिंग एंड this is like ultimate, like this is crazy. And I'm sure that there were people who thoroughly enjoyed it. They are here from the very first minute, and I think I want to congratulate them all, because they must have got a lot of information today. And I want them to really just go on Twitter, maybe, and just talk about it, that what they witnessed right now. Because मैं फिर बोल रहा हूँ कि 2 घंटे लग के 9 पेज आज तक किसी ने नहीं सिखाए ग्लोबली। So this is one of the best video of mine personally, where if you understand white paper, you understand Bitcoin. If you understand white paper, you understand the difference between shit coins and Bitcoin. If you understand the white paper, you understand why Web3 is thriving, why it was possible for them, why Bitcoin proved to be the base for it. If you understand white paper, you can take the right decisions. If you understand the white papers, you will be into less losses. And you get a lot of clarity, right? So this was one of the most iconic videos. Thank you very much. It was possible only because of Rachari, and only a technical guy could have given so much of in-depth analysis. Even I couldn't have justified making a video on my own. So thank you, Rachari. Thank you very much for taking out time. I thoroughly enjoyed it, and and I know that I'll watch this video personally again, and I recommend that you should watch this video again in your free time. Thanks for having me. This was fun. This was amazing. This was important. And probably this is the first time we did something like this in India. Hmm. And I hope more of such contents are going to come. More people are willing to go deep down into the Bitcoin rabbit hole. And we are just getting started. We are very, very early. And thanks for having me Yeah. again. Wishing once again a very happy birthday to Bitcoin and to Satoshi, wherever he is. It's a great moment and a great day for us. And thank you very much, Rachri. I really don't have words to say, express my gratitude to you, and for taking out 2 hours just to explain, those 9 pages. Thank you very much, guys. Once again, if you really liked the video, please press the like button, do subscribe, do follow Rachri on Twitter. I put the link in the description. He keeps tweeting about Bitcoin and some very amazing facts about Bitcoin. Do follow him there, and do watch the video again during your free time. And please recommend this video and share this video on Twitter and in WhatsApp group and in Telegram channels, wherever you are. Not for me, not for the growth of my channel, not for I'll get more subscriber. It is for the benefit of humanity. And that was the only vision of Satoshi Nakamoto. Selfless dedication to humanity. That as an individual, if Satoshi had born, he wanted to contribute to this humanity. He wanted to bring this humanity out of the problems, you know. So if you really want to embrace this industry, you need to be selfless in your approach, and you really need to dedicate your life in serving the humanity. And that exactly what we did right now, by giving our 2 hours of our time to cover 9 pages that are in existence for the past 14 years, and nobody covered the Bitcoin white paper for 2 hours. Nobody gave the Bitcoin white paper 2 hours to explain it. This is for the first time this has happened, and I am really proud of my effort. And I really want to thank you, Rajni, for this. Thank you, guys.